अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग नवाब्स किचन के स्टाइल में रेड वेलवेट केक बना रहे हैं। जी हाँ, क्रिसमस के मौके पर बच्चों को हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उन्हीं हाथों से एक केक कट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं। आज हम लोग बच्चों को क्रिसमस के मौके पर रेड वेलवेट केक बना रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही डिलीशियस केक है, बहुत ही टेस्टी केक है। इसको आज हम लोग बच्चों के लिए ख़ास कर क्रिसमस के मौके पर बनाने के सोचे थे। इसके लिए एक मिक्सचर बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग ऑल पर्पस फ्लोर मैदा लेंगे। इसी फ्लोर में हम लोग कोको पाउडर भी ऐड करेंगे। कोको पाउडर ऐड करे बाद हम लोग इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके हम लोग बाजू रखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस भी देखेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इस पाउडर को अलग से निकाल के रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस, उसके लिए पहले हम लोग शुगर लेंगे। इसी शुगर में हम लोग मेल्टेड अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे। शुगर को बटर में अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इसमें एग्स ऐड करेंगे। शुगर और बटर के साथ एग्स ऐड करे बाद इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए। इस मिक्सचर को भी अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे, वेजिटेबल ऑयल। ऑयल से मिक्स करे बाद हम लोग इसमें बटर मिल्क भी ऐड करेंगे। बटर मिल्क के साथ साथ हम लोग इसमें वनीला एसेंस भी ऐड करेंगे।
इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग आज रेड वेलवेट केक बना रहे हैं। केक को हम लोग रेड कलर में दिखाने के लिए रेड कलर ऐड करेंगे। शुगर अच्छी तरह मेल्ट हो गए बाद हम लोग इसमें जो पहले ही मिक्स करके रखे थे ऑल पर्पस फ्लोर के साथ, उन मिक्सचर को इसमें डालेंगे। अब इस सब मिक्सचर को हम लोग दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे और उसी को कोल पे हम लोग केक बनाने के लिए रखेंगे। माशाअल्लाह, केक तो परफेक्टली बन गया है। इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी केक पे हम लोग क्रीम अप्लाई करेंगे।
माशाअल्लाह क्रिसमस केक, रेड वेलवेट केक तैयार है। जी हाँ, स्पेशली आज हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशंस बच्चों से कराने के लिए आज एक केक बनाए थे। जो भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, नवाब्स किचन सारा टीम आप सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए हैप्पी क्रिसमस। और इसी केक को हम लोग बच्चों के हाथों से कट करा के उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए। आज का ये वीडियो देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे Nawabs_kitchen 786 पे फॉलो करिए। मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होऊंगा। और हमारे टीम तक पहुंचने के लिए 786guardfoods@gmail.com पर मेल करिए। हम लोग आप तक पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए इन मासूम बच्चों के लिए और हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।